हेलो वुड बी मॉमीज, वेलकम टू मोस्टली मॉम। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में दैट आई हैव लर्नड ओवर द पीरियड ऑफ माई 2 प्रेगनेंसीज। आई विश दैट आई न्यू ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इन एडवांस. For those who are watching me for the first time, hi, I'm Nidhi. I'm mother of 2 boys, 7-year-old and 2-year-old. And on this channel, I share my personal experiences and my research work to help you in your parenting journey. Please take a moment to subscribe my channel and hit that notification bell icon just in case you like the content I provide to you. So without any ado, quickly let's dive into the video. The first on my list is stop Googling and enroll for a pregnancy app. Yes guys, मुझे नहीं पता था during my first pregnancy that I have to enroll for a pregnancy app और मैं हर चीज़ जाकर Google पर देखती थी. The problem was that there are so many different opinions given by so many different people and it made me more confused and more conscious about my body. इससे अच्छा है कि आप किसी भी pregnancy app पे enroll कीजिए and you will get exactly the right kind of information and the right amount of information that you need. वो आपको week wise एक information देंगे, the development of your baby, the development of your body and the changes you might feel, and that's all. You will not get confused. For those who are avid readers and you like to read a lot, you must read a book by Heidi Mudkoff. I read that book and that is an amazing book, What to Expect While Expecting. By the way, the baby grows from 3 inches to 6 inches in your second trimester. That means the baby was this when you completed your first trimester and now the baby will be this post completing your second trimester. The number 2 on my list is keep an expert by your side. By an expert I mean a doctor whom you can talk everything and anything about. बिकॉज आप अपनी चाची से पूछेंगे, आप अपनी नानी से पूछेंगे, आप अपनी दादी से पूछेंगे, आप अपनी मदर से पूछेंगे, सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं और उनकी प्रेगनेंसीज भी अलग थी. द ग्रोथ ऑफ योर बेबी एंड व्हाट एग्जैक्टली यू माइट बी फीलिंग. देयर आर फ्यू लेडीज जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी हो जाती है. डू टेल इफ़ यू फील दैट यू आर सल्किंग, डू टेल इफ़ यू आर फीलिंग दैट यू आर लेथार्जिक टू योर डॉक्टर एंड दे विल हेल्प यू आउट. अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल हैव लेवल 2 अल्ट्रासाउंड इन योर सेकेंड ट्राइमेस्टर, जहाँ पर डॉक्टर आपका डिटेल्ड स्कैन करेंगे अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ योर बेबी. माइंड इट दैट सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपके बेबी की बॉडी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है. दैट मीन्स द बेबी दो इज़ अ मिनिएचर साइज बट उनके सारे पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं. द हैंड्स, द लेग्स, द माउथ, द फीचर्स, द आइज एंड एवरीथिंग. सो इन लेवल 2 अल्ट्रासाउंड वो आपको हर एक चीज़ अच्छे से दिखाते हैं. माई टिप हियर वुड बी कि लेवल 2 अल्ट्रासाउंड जिस दिन आपको कराना हो, मेक श्योर कि आपके पास एम्पल टाइम हो, जस्ट बिकॉज इट टेक्स ऑलमोस्ट 30 to 40 minutes in that scan itself. Apart from that, sometimes when the baby do not move, they will give you extra time to have something so that baby movement start ho and they can see all the parts. Here I would like to advise that you can go for a colored scan also because these pictures remain with you for lifetime and colored scan has a better visibility. Apart from this ultrasound, doctor will guide you for getting vaccinated. You must get an influenza shot and even COVID as for now. Number 3 is opt for prenatal yoga or involve yourself in a workout. While I was pregnant in the first time, I did not know what is the importance of prenatal yoga or workout because आप पहली बार pregnant होते हो and everyone around is so caring. They used to make me rest and that gave me lethargy and back pain. Guys, अगर आप भी pregnant हैं and if you're in a second trimester, you will know the change that you must have felt because first trimester में आप कुछ खा पी नहीं पाते हो, आप बहुत ज़्यादा tired feel करते हो and the first trimester issues like vomiting, nausea has suppressed. So make sure that you involve yourself in a workout because that will give you a productive outlook towards your pregnancy. Also with the prenatal yoga that you do, they tell you the importance of breathing exercise. बहुत सारी क्लासेस ऐसी हैं जो आपको नॉर्मल डिलीवरीज के लिए भी रेडी करती हैं. इनमें से बहुत क्लासेस मैटर्निटी होम्स भी दे रहे हैं, जैसे कि फोर्टिस का ला फेम इज़ रनिंग अ प्रोग्राम कॉल्ड मामा मिया. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ अपोलो क्राडल्स program for prenatal yoga. Apart from that, there is Nutan Pandit in Defense Colony and there are many more. If you do a research on Google, you will get your place to go for a prenatal yoga. Number 4 is prepare a checklist of stuff you are gonna need. You are a first time mom and there will be many stuff that you're gonna need, and because after your delivery you will be on bed for some time, you need to have that checklist. You need to start shopping. मैं first
ट्राइमेस्टर में आपको कभी भी शॉपिंग एडवाइस नहीं करूँगी, बिकॉज आपको नहीं पता कि प्रेगनेंसी आगे कैसी जाने वाली है. बट इन सेकेंड ट्राइमेस्टर यू नो दैट द बेबी इज़ गोना कम, और आपको मोस्टली सेक्स ऑफ द चाइल्ड भी पता है. इन दोज कंट्रीज़ जहाँ पर सेक्स रिवील नहीं किया जाता, जैसे हमारी इंडिया में, यू कैन एक्चुअली ऑप्ट फॉर सम न्यूट्रल कलर्स. ब्लू और पिंक इज़ नॉट अ नेसेसरी थिंग. एंड ग्रैब अ पेन एंड पेपर बिकॉज आई एम गोना शेयर some points that you need to have in your checklist, and I'm gonna read it through a paper that I have in my hand. Number 1 is baby clothes. You need front open clothes क्योंकि आप बच्चे को ऊपर से नहीं पहना पाएंगे. You need front button or front zipped clothes. Number 2, you need diapering material. Diapering material means either you use cloth diaper or you use disposable diaper or you use nappies, and you're gonna need a lot of them. Apart from that, babies has a rash problem, तो आप कोई भी एंटी रैश क्रीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं. नहीं तो आप अपने पास एक वर्जिन कोकोनट ऑयल भी मंगवा सकते हैं. दैट इज़ अ ब्लिस when it comes to rashes. Just in case you want to increase your knowledge about rashes, you can actually look for the video that I've already done above. I will link that in the I button above. Apart from that, you're gonna need a lot of wipes, bottles, sterilizers, bottle warmers, baby wrapping sheets, dry sheets, baby bedding, baby bather, baby care products like moisturizers, soaps and shampoos. This was the checklist that I made. Just in case you need help with any of those, you can actually go through and scroll through my videos. I have already made a video on baby moisturizers as well. Apart from these baby products, you will be needing some mommy products as well. So number 1 will be baby feeding pillow that helps in smooth functioning once the baby is delivered. उसके अलावा आपको चाहिए बेबी निपल क्रीम, because it happens that you end up having sore nipples, or nipple cream is a bliss at that point of time. उसके अलावा you can actually invest in some massagers, because this time in my second pregnancy I invested in a foot massager, and that really relieved me as I felt lethargic and tired most of the time. Apart from that, you have to invest in good moisturizers, because you will be having stretch marks throughout your pregnancy as well as post that. So you need a good moisturizer. I do not push to buy in heavy moisturizers. A virgin coconut oil again is a bliss, because it actually penetrates in the body and help in deep moisturization of the body. आप coconut oil भी 2 से 3 बार use कीजिए and you will feel the difference with the skin. Now the fifth and the last on my list is invest in good quality maternity wear. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैटर्निटी वियर सिर्फ 5 से 6 महीने काम आते हैं, बट दैट इज़ नॉट अ फैक्ट. इफ़ यू आर अ वुड बी मॉमी, इन्वेस्ट इन मैटर्निटी वियर राइट नाउ इन योर सेकेंड ट्राइमेस्टर, बिकॉज योर बेली इज गोना go boom after your second trimester, and you will be needing those maternity clothes. H&M, Mother Care, Zivame and many other brands are having good maternity wear. You can actually invest in few maternity wears from them, because they're gonna help you post pregnancy as well. एकदम से तो आपका वेट जाने नहीं वाला, एंड ऑल दोज maternity wear has an elastic band over the belly part, so that helps compressing the belly, especially अगर cesarean है. So that maternity wear is the easiest thing that you will find to wear. Apart from that, जो maternity wear tops होते हैं, they are meant for feeding the child in public as well. So just in case you are invest in a good quality maternity wear, because you're gonna wear that for next 1 year as well. So guys, whatever information I have provided you, you will find it worth it for your second trimester. Do share your experiences leaving the comment below. You can look forward for my next video where I will be discussing about third trimester care. और मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ एक स्पेशल वीडियो जिसमें हम बात करेंगे पोस्टपार्टम केयर के बारे में विद अ रेनाउंड डॉक्टर. मैंने एक गायनेकोलॉजिस्ट को इनवाइट किया है टू हेल्प विद द पेरेंटिंग जर्नी ऑफ योर्स, और वो आपको गाइड करेंगी कि आप कैसा फील कर सकते हैं आफ्टर पोस्टपार्टम, दैट मीन्स पोस्ट डिलीवरी, एंड शी विल डिस्कस every aspect of postpartum that no one discloses. So stay tuned, stay subscribed. Bye bye.